Now we will read different type of special angles. We see that this is a starting ray. How angle is formed? I told you angle is zero angle formed with a starting ray, which itself I told you that this is the starting ray. So then I rotate the ray to form an angle having the same vortices, having the same vortex. So मान के चलते हैं कि this is the our initial ray. Now you rotate this ray. I'm rotating this ray itself having the same vortex. This is the same ray, and I'm rotating it. So I'm rotating it like this. So it forms along the same vortex. I'm rotating. This is a special kind of angle because whole angle is rotating. It is making a complete angle like this. So we call it complete angle. So we will talk about how much is it, why is it that complete angle is 360. We will talk about it, but let me tell you what are angles, what are special kind of angles. So this is complete angle, but when I take half of it, say I rotate half of it, when I rotated full it was complete angle. When I rotated it half, okay, when this final ray, this starting ray, and here we have final ray, okay, then this angle formed, that means this angle formed, and here how rotation happened, like this, only the half of it. So this is my straight line, because when I rotate half it becomes a straight line, so we call it straight angle, okay. Then we talk about when we have this starting point, and then I rotate 180 का भी स्ट्रेट एंगल का भी हाफ, मतलब जो मेरी स्ट्रेट लाइन थी ना, स्ट्रेट लाइन का भी मुझे हाफ करना है. स्ट्रेट लाइन का हाफ कैसे खड़ा होता है? ऐसे, राइट. दिस इज द स्ट्रेट लाइन का हाफ इधर यू कैन सी. तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल. So this is our right angle. I will talk about it again, what are these angles, but for now just understand what I'm talking about. This is right angles. I'm just talking about special type of angles. Now again we are on, so when our final ray is here, we form a right angle with the starting ray, right? Now if we are again on a starting ray, and I make rotation till the right angle, anywhere till right angle, either here, less than 90 degree. See, this, then these angle are called acute angle. Acute angle are the angle which are less than 90 degree. So when after final rotation, final ray is here, the angle formed is less than 90, then we call it an acute angle. Now after acute angle, when you form an angle, you have starting point this, and you rotate starting ray this, and you rotate around the like this, and anywhere after 90 degree you rotate, some kind of angle is formed. I'm doing it again. So when you rotate like this is again an acute angle. Here whatever is rotated, here again a acute angle, then you have a right angle, and then a special, यहाँ से एक special type of angle एक और create हो जाता है ना. इट इज़ मोर देन 90 डिग्री. कहाँ तक मोर देन 90 डिग्री लेना है हमें? जब तक इस स्ट्रेट लाइन से पहले तक, लेस देन स्ट्रेट लाइन, ठीक है. स्ट्रेट लाइन से पहले तक, मतलब दिस इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होते हैं. तो वेन एवर वी हैव
more than 90 degree and less than, whenever we have more than 90 degree and less than 180 degree, it forms an obtuse angle. तो obtuse angle का form होते हैं, कितना form होता है I will tell you, but this is 90 degree, we know that. So straight angle और right angle के बीच में जब angle हमारे form होते हैं, we call it obtuse angle. obtuse angle. उसके बाद हमारे पास 3 राइट एंगल्स की बात करें पहले तो एक रिफ्लेक्स एंगल और फॉर्म होता है, जो कि अगर हमारा स्टार्टिंग रे ये है और मैं कहीं भी इस स्ट्रेट लाइन के नीचे एंगल फॉर्म करती हूँ कहीं भी, ठीक है, तो ये मेरा कैसा बनेगा, यहाँ से ऐसे, है ना, फिर थोड़ा सा और यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा और यहाँ से ऐसे, तो ये मेरा बनेगा रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा, बिकॉज हमारी स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की. आई विल टेल यू व्हाट 180 डिग्री इज़, आई विल टेल यू व्हाट इज़ 1 डिग्री, आई विल टेल यू व्हाट इज़ डिग्रीज़, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू ये स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री होती है. 180 डिग्री से ज़्यादा, मतलब स्ट्रेट लाइन से जब भी ज़्यादा बनेगा ना एंगल, वी कॉल इट रिफ्लेक्स एंगल. सो just to repeat, we just talk about 6 kinds of angles. These are special angles, ठीक है, special type of angles. Firstly, we had a acute angle when it was less than 90 degree. We call it right angle. When it was less than right angle, then we call it acute angle. It was just like this, just that's it, और इतना 90 से थोड़ा सा भी कम हुआ, it will form an acute angle. और अगर 90 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हुआ, अप टू स्ट्रेट लाइन तक के एंगल्स को हम बोलते हैं, 90 से स्ट्रेट लाइन तक के एंगल को हम बोलते हैं, और एंगल फॉर्म्ड लाइक दिस, वी कॉल इट obtuse angle. And when it reached here, it was right angle, right, then it again between 90 degree and straight line, right angle and straight line will form obtuse angle. And here it will have straight line, and below straight line, straight angle, it will have reflex angle. So that's it. The special kind of angle are these. Now special thing we can talk about here is 2 right angles form a straight line. Is it that it is a straight line? So we see that 2 right angles form a straight line. Is it true? Yes. 2 right angles can form a straight line. They forms a straight line, right? And third thing is straight line or straight angle. Straight line or straight angle. So we can talk about perpendicular lines. What are perpendicular lines? 2 lines which are making 90 degree with itself. So this is 90 degree or a right angle to itself. This is right angle, this is right angle. How do we know that it is right angle? We take a square corner. We have already read that this is a square corner of a rectangle, and we just keep it here, and superimposition method we see that it is a right angle. Here it is a right angle, here it is a right angle, and here it is a right angle. So we can see that it is a right angle. Any book have a square corner, okay, they form a right angle. So you just keep it here, you can check that it is a right angle. So and a square corner, and what other things, all the squares have the square corner, all rectangles have the square corners. You can see that what are square corners, and when 2 lines meet each other, they could meet like this, they could meet like this, but this is not square, this is not square, because square has to be like this, some angle is left. So look at this, some angle is left here, so it has to be this. So to have it perpendicular, it has to be like this. This is right angle. So 2 lines could meet like this, है ना, but this is not right angle, this is not right angle. So right angle has to look like this. It should have square corner like this, 4 square corners, and yes, 2 right angles make 1 straight line.
two right angles make one straight angle, right? Learn, remember this may be asked in your exams. So we have just talked about special type of angles. Now come to page number 32 and understand this diagram and understand the concept of degrees. To talk about degrees, we say that 180 degree, 90 degree, 180 degree, है ना? We talk about this. So what are these degrees? First of all, we should know it. So when you have a starting point this, and we were rotating an angle, starting with this ray, and we are rotating like this, a circular motion. This had a circular motion, right? So it will forming a circle. Now this is the angle we are talking about, है ना? This is the angle we are talking about. This angle we are talking about. ठीक है? Now I have to divide this angle into 360 parts. You can't do it manually. But you have to divide this whole angle into 360 part. This whole angle, complete angle, into 360 part. Then each part is 1 out of 360. Each part is 1 out of 360. Each part is 1 out of 360. So this is the measure of angle, 1 out of 360. Then we call it 1 degree. 1 degree. 1 degree. And 360 ka half, that means this complete angle is 360 degree. 1 degree, 1 degree, 1 degree, and totally we are taking 360 ना, 360 parts से divide किया तो देखो 360 हुआ ना, तो this complete angle is 360. ठीक है? And then complete angle 360 हुआ. 360 का हाफ क्या होता है? 180. तो जब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हमने हाफ बना दिया, तो स्ट्रेट एंगल जो हमारा फॉर्म हुआ, जब इस 360 डिग्री को, जब ये 360 डिग्री कंप्लीट एंगल था, इसको मैंने हाफ में किया तो 360 का हाफ हो गया 180 डिग्री. तो ये जो पूरा सिर्फ हाफ एंगल लिया ना मैंने, 360 का हाफ स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पर, तो वो हमारा हुआ 180 डिग्री. तो हमारा जो स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ वो हुआ 180 डिग्री. अब इस स्ट्रेट एंगल का भी हाफ लिया हमने. 180 का हाफ होता है 90 डिग्री. तो हमने इसका हाफ लिया, बिल्कुल हाफ कर दिया, तो 180 का भी हाफ हो गया. तो ये वाला जो राइट एंगल बना ना, राइट एंगल इज़ 90 डिग्री. तो 290 डिग्री 180 डिग्री बनाते हैं. दैट मीन्स 290 डिग्री एक यहाँ और एक यहाँ, 290 डिग्री 180 डिग्री बनाते हैं. तो 2 राइट एंगल्स जो हैं 290 डिग्री, एक यहाँ 90 डिग्री, एक यहाँ 90 डिग्री, 180 डिग्री बनाते हैं. तो 290 एंगल्स जो हैं, 2 राइट एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं. तो हमने देखा अगर 2 राइट एंगल 180 डिग्री बनाते हैं, तो अगर हमें पूरा रोटेशन लेना है तो कितने राइट एंगल हैं? 1 2 3 4. दैट मीन्स पूरा 360 डिग्री को फॉर्म करने के लिए 4 राइट एंगल्स चाहिए. 1 2 3 4, है ना? 360 को पूरा फॉर्म करने के लिए 4 राइट एंगल्स चाहिए. तो एक राइट एंगल ये है, 2 राइट एंगल से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. अगर मुझे पूरा 360 डिग्री चाहिए तो मेरे को 1 2 3 और 4 राइट एंगल्स की नीड है. ये पूरा 4 राइट एंगल्स मिलाएंगे तो ये पूरा 360 बन जाएगा, है ना? तो 4 राइट एंगल्स चाहिए टू फॉर्म अ कंप्लीट एंगल. अब ये मेरे पास एक सर्कल है. अब इस सर्कल में मुझे हाफ ऑफ टर्न लेना है, हाफ ऑफ द होल टर्न रोटेशन. हाफ ऑफ द होल रोटेशन मतलब हाफ ऑफ 360 डिग्री, इट इज़ 180 डिग्री. हाफ होल रोटेशन इज़ 360 डिग्री. सो हाफ ऑफ 360 डिग्री इज़ 180 degree. So half of full turn is of the angle. Full turn मतलब this whole turn of the angle is 180. 1/4 is half of half. 1/4 कितना हुआ? Half of half. Half is 180 and half of half is this right angle 90 degree. So this is 90 degree. Okay. So half of the full turn is equal to half of 360 degree. ठीक है? half of half is 1/4 of 360 degree which is 90 degree, and 1/8 मतलब half of 360 degree मतलब 180 का भी half is 1/8 of the turn, full turn. that means इसका भी half, 90 का भी half, that is this. तो 90 का half करेंगे you will have
half of 1/4 of the turn, half of 90 degree. It is 45 degree. So this is it, and this is how we talk about degrees. This is how we talk about complete angle, straight angle, and 90 degrees. These are the how we, when we rotate an angle, what is half of the rotation, what angle is formed, if half of the and again half of the half is taken, what angle is formed. So just take a circular paper and you keep on folding the paper to form this turns and the angles. You will see that how, what, if you are able to make this 90 degree or not, and then you can check that if you are able to make this 45 degree when you fold the paper with 90 degree along the edge. So this is about degrees. So when you turn this paper, I thought I should show you on a piece of paper. This is circular paper, and 360 I divided the center point into 360 parts, central angle into 360 parts, है ना? And I just 360 parts, and then I converted into half, and you see that here 180 degrees will come here, 180 parts will come here, or 180 units will come here, and 180 units will come below. So this will form a straight line, and 180 degree will be there. Then you convert it into half, you will see that right angle will be formed. Right angle will be formed here. Right angle will be formed, and 180 का half होता है 90 units. That means 90 unit will be here like this, and 90 units will be here. So 90 is 180. 290 angles is 180. Then I opened this. You will see that 4 right angles will be formed. So 4 right angles, मतलब 490s will be needed to form this full rotation. If full rotation is taken, you need 4 right angles, and if half rotation is taken, you need, what is the 180 degree will be formed, and if 1/4 rotation is taken, that means iska bhi 1/4 kar diya, then 90 degree will be formed here, and if 1/8 rotation is taken, that is iska bhi half is 1/4 का भी half is 1/8 rotation is taken. You will see that how much angle is this angle is 45 degree. 90 का half होता है 45 degree. So here 145 units will be formed. So इसका भी अगर हम half करेंगे ना, 1/8 का rotation half होता है 1/16, तो इसका भी half करेंगे तो 45/2, मतलब 45 का भी half यहाँ हो जाएगा 22.5 degree. दैट मीन्स 22, यहाँ पर 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और यहाँ पर 45 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पर ये एंगल जो है 90 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना. एंड यहाँ पर ये एंगल 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रेट एंगल, एंड ये पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो दिस इज़ अबाउट डिग्रीज, हाउ रोटेशंस and taking half of the rotation or taking 1/4 of the rotation, how much degrees form. This is how we talk about measures of the angles. Then parents, what is 30 degree and what is 40 degree? For example, आपके पास एक यही सेम सैम्पल मैं लेती हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए कि ये जो है ये 90 पार्ट्स में डिवाइडेड था, मुझे चाहिए 30 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो मैं इसको 3 यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया, और ये जो पार्ट है ये 30 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये वाला जो पार्ट है ये 30 लाइंस में जो डिवाइडेड है ना, वो मैंने वहाँ पर मार्क किया. तो ये वाला पार्ट मेरा हो गया 30 डिग्रीज़. अगर यही पार्ट, इतना पार्ट मेरा 30 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये मेरा हो गया 30 डिग्रीज़. अगर ये मेरा पार्ट, इतना पार्ट, अगर ये मेरा पूरा पार्ट 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये वाला एंगल 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऐसे, तो ये मेरा 60 यूनिट्स हो गया 60 डिग्रीज़.